of your science class. Our today's chapter is combustion and flame. So when we talk about combustion, we are talking about fire. Okay? So in this class, first of all, we will deal about combustion, how fire takes place, and then what is combustion and what is the difference between combustion and fire, or combustion, or you can say combustion or flame. So different concepts, and we have to discuss the different knowledge in this chapter. Obviously, when we discuss about different concept, you will discuss about the different types of knowledge. Okay, so let's begin this chapter. Our chapter is combustion and flame. I hope this is visible to you. Okay, so our chapter is combustion and flame. If you so let's begin the class. It is class 8th chapter. Okay, class 8th science. Okay, so let's begin with combustion. What is combustion? So our first topic is combustion. So you can think that a combustion is nothing but a chemical reaction. What it is? It is a type of chemical reaction. Okay. So let's write the first point, which is a fact of about the combustion. Combustion के बारे में एक fact बता रहा हूँ आपको, that what happens when, what would have happened when people do not know about combustion or people do not know about fire. Okay, so think about yourself only. अगर आपको फायर के बारे में, आग के बारे में, combustion के बारे में कुछ पता ही नहीं हो, तो आप फायर को देख के कैसे रिएक्ट करोगे? फायर मीन्स ऑब्वियसली अ लाइट. तो अब सडनली कहीं पे कोई बर्निंग लाइट आ जाए, फायर आ जाए, तो ऑब्वियसली इन दैट सिचुएशन यू वुड बी अफ्रेड. आप बहुत डर जाओगे उसे देख के. सो इन अर्लियर टाइम व्हेन पीपल डू नॉट नो अबाउट फायर और कंबशन थिंग, देन दे ऑलवेज stay alert about fire. They always are afraid of fire. बहुत ज़्यादा डरते थे फायर से. ओके, एंड इवन दे स्टार्टिंग वर्शिपिंग फायर. किसी ने फायर को भगवान मान लिया, और किसी ने फायर को यानी आग को एक, उसे बोल सकते हैं हम, एक नेगेटिव एनर्जी मान लिया, जिससे लोग डरना स्टार्ट कर दिए. Okay, so let's begin the first fact about combustion. Okay, so write this thing. Before the discovery of oxygen, before the discovery of oxygen, the fire was a big mystery. So this is the first point. जब तक लोग ऑक्सीजन को नहीं जानते थे, जब तक वहाँ उस तरफ, मतलब जब तक लोगों को नहीं पता था ऑक्सीजन क्या होता है, ऑब्वियसली इफ़ यू डोंट नो अबाउट ऑक्सीजन, you don't know about combustion, because obviously combustion is a chemical reaction which happens in the presence of oxygen. Okay, so obviously जब तक ऑक्सीजन का इन्वेंशन नहीं हुआ, डिस्कवरी नहीं हुआ, इन्वेंशन इज नॉट राइट वर्ड, डिस्कवरी, जब तक ऑक्सीजन का डिस्कवरी नहीं हुआ तब तक लोग और कंबशन के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे. एंड ऑब्वियसली व्हेन यू डोंट नो अबाउट कंबशन, यू डोंट नो अबाउट फायर. ओके, सो बिफोर द डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन, द फायर वाज अ बिग मिस्ट्री.
ओके, जब तक ऑक्सीजन का डिस्कवरी नहीं हुआ तब तक फायर क्या था, एक बहुत बड़ा मिस्ट्री था। कुछ लोग उससे डरते थे, कुछ लोग उसे भगवान मानते थे ऑब्वियसली। राइट द नेक्स्ट पॉइंट। Antoine Lavoisier realized that the oxygen is the key to solve this mystery. So this is the second point. Actually what we are doing is, before starting the combustion topic, we are reading the history of combustion. combustion के पहले सिचुएशन कैसी थी, एंड देन व्हाट इज combustion, combustion है क्या, ओके। एंड obviously we have to deal many concepts about combustion हो कब होगा, नहीं होगा, किसके प्रेजेंस में होगा, नहीं होगा, ये सारी चीज़ें, ओके। सो दिस इज अ नेम, डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज नॉट इंग्लिश वर्ड, दिस इज अ नेम, Antoine Lavoisier. So Antoine Lavoisier realized that the oxygen is the key to solve this mystery. So obviously in that time combustion was a mystery, fire was a mystery. So to solve that mystery, Antoine Lavoisier discovered the oxygen. Antoine Lavoisier जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने ऑक्सीजन को इन्वेंट किया था, एंड ऑक्सीजन को इन्वेंट करते ही उन्हें रियलाइज़ हो गया कि ऑक्सीजन ही इस मिस्ट्री को सॉल्व करने का की, यानी कि ऑक्सीजन ही रीज़न है कंबशन का। दैट इज द थिंग। सो कमिंग राइट दिस थिंग, देन coming to the next point. Now so in next point we will write the definition of combustion. The definition of combustion, okay? So write the definition. Combustion is a chemical reaction combustion is a chemical reaction to produce heat and light, okay, to produce heat and light. And obviously to produce heat and light, and the last part in the presence of oxygen. This will be the perfect definition. Or you can also write air here. So we are dealing the definition of combustion. I am explaining this definition. Combustion is a chemical reaction to produce heat and light in the presence of oxygen. Okay, so combustion is nothing but a chemical reaction, okay, and it happens or it takes place always in presence of oxygen or air, because air also has oxygen. Note this thing. This is the definition. Now I will deal the next point of this chapter. What I am doing is I am explaining the chapter point by point, okay. So if any new topic comes, then I will put that as a headline, okay. So right now we are dealing in points only, about combustion only, okay. The next is also a definition. It is a point as well as it is also a definition. So write this thing. The combustion
the combustible materials are called fuel. The combustible materials are called fuel. So this was the definition of fuel. Okay, so what do you mean by combustible? So combustible materials are those materials which can takes place in combustion reaction. Okay, that is the combustible material. So combustible materials are called fuel. ऐसे materials जिनको तुम combustion के लिए use कर सकते हो वो fuel होते हैं. Okay, for example wood we use in for example जैसे गांव में लोग फ्यूल के जगह यूज़ करते हैं गाय का गोईठा. ओके, द काउ डंग एंड एनीथिंग दैट कैन बी बर्न्ड आर फ्यूल. ओके, so fuel doesn't means only petrol or diesel or kerosene. Fuel means anything that can be burnt. A paper is also a fuel, a wood is also a fuel. Okay, cow dung is also a fuel, which is we call goita. Okay, so these things are fuel. Note this point. Now in next point I am dealing with some examples of combustion. So some examples. Of combustion. So the first example of combustion is production of carbon dioxide, which is very high in our environment. So note this thing. Carbon burns with oxygen in the presence of air to produce CO2. CO2 means carbon dioxide. Okay, so this is an example of combustion reaction. Okay, or you can say combustion. Carbon burns with oxygen in the presence of air to produce CO2. कार्बन बर्न होगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ. एंड कार्बन ऑक्सीजन के साथ बर्न होगा. नो, मे बी दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. कार्बन बर्न्स not with the oxygen. Carbon burns in the presence of air to produce CO2. This is the right statement now. So कार्बन बर्न होता है किसके प्रेजेंस में? एयर के प्रेजेंस में, और यू कैन से ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और फिर वो प्रोड्यूस करता है CO2. कार्बन मीन्स एनीथिंग दैट यू यूज इज अ कार्बन. So you can understand it. If I am using this marker, this is also made up of carbon. This glass is also carbon. Okay, the wood is also carbon. Paper is also carbon. Okay, if you are sitting on a chair, that is also carbon. Okay, so carbon means anything. Okay, so कार्बन को आप जब बर्न करोगे एयर के प्रेजेंस में तो ऑब्वियसली CO2 प्रोड्यूस होगा. दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल. नाउ नोट दिस थिंग, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट. I will give 2 more examples about this. So next example, number 2. Methane. Do you know about methane? Methane is CH3. Okay, so methane is CH4, not CH3. Okay, so methane burns in the presence of oxygen. In the presence of oxygen to produce CO2, carbon dioxide. So
सो मीथेन भी जब बर्न होगा, मीथेन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मीथेन को बर्न करोगे तो वो प्रोड्यूस करेगा व्हाट, CO2. सो नोट दिस थिंग. नाउ we will deal about some more concepts. So yeah, so our next point is condition for combustion. So think about a combustion process, or if you think about a combustion process, you can simply think about burning fire. Okay, so that is also a combustion. So when we think about burning fire or combustion, then what should be the conditions? आपके पास क्या क्या होगा तो आप combustion कर सकते हो, आप खुद सोचो. Okay, obviously you should have fuel. Okay, you should have combustible substance. Okay, and you should have the most important thing, oxygen. ऑक्सीजन के बिना कंबशन रिएक्शन होता ही नहीं. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यूल, देन कंबस्टिबल सब्सटेंस एंड देन फ्यूल. सो नोट दिस थिंग. सो व्हाट आर द कंडीशन ऑफ कंबशन? सो फर्स्ट इज फ्यूल, फ्यूल होना चाहिए आपके पास. सेकेंड इज oxygen. So no, the first is fuel, then oxygen, and the third and most important is accurate temperature or enough temperature for burning it. Okay, so third one is ignition temperature. It is called ignition temperature. So when we say ignition temperature, then ignition temperature is a temperature at which this fire starts burning. Temperature at which fire starts. So that is ignition temperature. Okay, so that can be that can also be your definition for ignition temperature. Now this is conditions for combustion, not condition, this is conditions. Now next point is a very important thing which is very frequently asked, the difference between combustible substance and incombustible substance. So write this thing, combustible substance and incombustible substance. So what we will do is write the difference between these two things. So the best difference is their their definition. Okay, so write the thing. Substances which can be burned are combustible substances So substances which can be burned are called combustible substances. ऐसे substances जिन्हें हम burn कर सकते हैं वो combustible substances हैं. Okay, for example this pen. So this pen is combustible substance because जब आप इसको burn करोगे तो ये जल जाएगा obviously. But when I talk about this glass, ये शीशा, then this glass is incombustible substance. इसे हम जला नहीं सकते. आप इसे जलाओ तो ये जलेगा ही नहीं.
बिकॉज ये क्या है, इनकम्बस्टिबल सब्सटेंस। और एग्जांपल्स अगर आपको चाहिए तो पत्थर, स्टोन्स, मिट्टी, बालू, ये इनकम्बस्टिबल सब्सटेंसेस होते हैं, ये नहीं जलते। एंड कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस वो होंगे, वो जलेंगे, जैसे वुड, पेपर, प्लास्टिक, दिस आर कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस। नाउ इनकम्बस्टिबल सब्सटेंसेस, substances which can not be burned are incombustible substances. So this is the definition and also the difference between these two. So note this thing, and I will now tell you the last point about today's class, then the rest of the things we will discuss in next class. Note this one. Now coming, you can write it as a note just for some answers in the exercise, or just for your information. You must remember this: for burning any substance, oxygen is needed. Which is the supporter of combustion. So oxygen is the supporter of combustion. That's what I am trying to explain in this topic, in this point. So for combustion, oxygen is the supporter. Okay, that's my point. Without oxygen we cannot burn, we cannot do combustion. Okay, जैसे आप for example, जैसे अगर आपने कहीं पे कहीं पे आपने आग लगाई, तो जहाँ पे भी आप आग लगाओगे, जैसे आपने चूल्हा जलाया है, तो चूल्हा में हम नीचे एक गैप छोड़ते हैं। आपने देखा होगा चूल्हा में हमने नीचे एक गैप छोड़ा हुआ रहता है, जिससे फायर अच्छे से बर्न होता है, कंबशन वहाँ अच्छे से होता है। अगर आप नीचे का स्पेस नहीं दोगे उसे खाली, तो वो ठीक से बर्न नहीं हो पाएगा। ओके, कंबशन वहाँ नहीं हो पाएगा एंड शायद फायर ना भी चले। ओके, तो दैट्स माय पॉइंट। प्रैक्टिकल एग्जांपल आप कर सकते हो, मोमबत्ती जलाओ एंड मोमबत्ती जला के उसे किसी चीज़ से ढक दो। ओके, मोमबत्ती अपने आप बुझ जाएगी, क्योंकि उसे ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा। दैट इज़ द थिंग। सो रेस्ट ऑफ द थिंग आई विल